Morning students, ready for study? Today a new topic is law of exponent. Okay, you study in 7th class in this topic, but we discuss about again this topic and solve next exercise. First law of exponent is x m power of m multiply x power of n equal to x power m plus n. Here we know that base is same and power is different, and multiply, so power is 8. For example means 2 power is 3 multiply 2 power is 4. So here base is same and power is different, so base is same and multiply पावर 8, पावर का हम वहाँ पे सम करते हैं, पावर 8 हो जाती है. सो 2 पावर ऑफ सेम. ओके, सो इस तरीके से ये रूल फॉलो होता है. सेकेंड रूल इज हियर x power is m divide x power is n, and here base is same and in divide between the two numbers, so base is same, so exponent in difference means उनके डिफरेंस हो जाता है, दोनों एक्सपोनेंट का हम डिफरेंस कर देते हैं. तो फॉर एग्जांपल यू नो दिस सच टाइप क्वेश्चन 7 power is 4 divide 7 power is 3, so 7 power 4 minus 3, so power is 3. Okay, so this type question you know that. Third rule is law of exponent. Third rule is here x power is m and again power is n, so we multiply the both the powers. मीन्स पावर डबल पावर जब होती है, एक से ज़्यादा पावर के ऊपर पावर होती है, तो उन पावर्स का मल्टीप्लाई होता है. सो हियर एक्स मल्टीप्लाई इंटू एक्स पावर मल्टीप्लाई एम इंटू एन. ओके, फॉर एग्जांपल सच टाइप क्वेश्चन 2 power is 3 and again power is 2, so 2 power with multiply the both the powers, so here 2 power of 6. Okay, next question is next question means next rule is x power is minus m and equal 1 by x power is m. पॉजिटिव पावर, यहाँ पे x की पावर नेगेटिव है, सो 1 अपॉन में वो पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सो 1 अपॉन x पावर इज m. ओके, फॉर एग्जांपल सच टाइप एग्जांपल इज 2 power is minus 5, so we write the 1 upon 2 power is 5. Okay, next question number rule number 5. Here next rule is x power is 0, so always time equal to 1. And sixth rule is x multiply x power is m multiply y power is m. Here rule is 6 and rule is first. Which difference between the two rule? And first rule is base is same and power is different, and last rule base is different but power is same. So we know power is same, so we write the power one time, and x multiply y multiply power is m. So here x multiply y equal to power is m, so xy power is m. Okay, so difference between the first and sixth rule. Okay, for example here 2 power is 5 multiply 3 power is 5, so we write the 2 multiply 3 and write the power one time, so 6 power is 5. Okay, so such type question solved by rule number 6. And 7 rule is x by y
x by y and power is m. So we write the power is x, power is x is m and power of y is m. ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर पावर दोनों की सेम है तो हम दोनों पे अलग अलग पावर लगा सकते हैं, और सेम पावर है और नंबर अलग अलग है तो उनको हम एक साथ बना भी सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सच टाइप क्वेश्चन, एग्जांपल x 3/5 and 3 power is 2 and 5 power is 2. So we write the 3/5 whole power is 2. ओके, सो डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है और डिवाइड में है क्वेश्चन, अपॉन में है तो हम उसको अपॉन में लिखकर पावर वन टाइम लगा सकते हैं। सो एंड क्वेश्चन रूल नंबर फॉर एग्जांपल रूल नंबर 5 का एग्जांपल, किसी बेस पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज टाइम 1 हो जाती है। सो हियर वी डिस्कस 7 रूल, ओके, and solve related question in exercise 2.2. So 1-2 question we discuss and remaining question in homework. Here question exercise 2.2 and we solve the question number second. Okay, second question is express the following into a single exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 2/3 पावर इज -5, 2/3 पावर इज 6 मल्टीप्लाई 2/3 पावर इज 2. वी राइट द सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, एंड सिमिलर क्वेश्चन इज -6/7 10 power is 10 multiply -6/7 power is -18 multiply -6/7 is power is 2. So we solve second question and first question is homework. Okay, so you solve the first question. Question number second is here, this exercise based on law of exponent. Okay, so we solve question number second. Exercise 2.2 question number second part is second. Question is -6/7 multiply 10 -6/7 power is 18 and -6/7 power is 2. So here all the base are same and power is different, so we use law of first, because here base is same and multiply and power is different. In multiply, question in multiply and base is same and power is different, so we use first rule x power m plus n. ओके, ये रूल हम यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम बेस को वन टाइम राइट करते हैं तो -6/7 एंड प्लस 10 प्लस -18 plus 2. -18 is negative, so we write the in bracket -6/7 10 plus minus -18 plus 2 and -6/7. Here we solve the integers, means plus minus something is, so we know that 10 is positive and 18 is negative, so -8 because difference between 8 and greater number is negative, plus 2 -6/7 and -6 is answer, because one is positive and one is negative, so we subtract them. Next here value of rational number is negative power, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मीन्स हम फार्मूला लिखेंगे a/b पावर इज -m. सो वी सॉल्व b अपॉन a पावर इज m, मीन्स माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल किया जाता है नंबर्स को. तो ये -7/6
एंड पावर इज 6 पॉजिटिव बन गई क्योंकि हमने माइनस को तो वहीं रखा लेकिन नंबर को रेसिप्रोकल किया. सो इट इज आंसर ऑफ this question. Okay, you solve the remaining question. Thank you. So student, your homework is example number 6 is your homework. You solve this question and choose the correct answer. Okay, in your copy. And example number 7 you write in copy example number 6 and 7. And in exercise 2.2 question number noted first is homework. Okay, and question number 3 first and second is homework. Okay, and remaining questions solve in next video. So you solve second, first, third के first and second and 2 example and 5 question also. Thank you.